पे ये कपड़े बनने का काम होता है। अभी जिस यूनिट में हम आए हैं उसका नाम है फैनी क्रिएशन। सबसे पहले हम देखेंगे कि जो कपड़ा बन रहा है उसमें कौन सा डिज़ाइन बनता है, वो कैसे डिसाइड होता है। तो यहाँ पे आप कंप्यूटर में देख रहे हैं, जो ये डॉट डॉट है वहाँ पे उसका डिज़ाइन है और जो ब्लैंक है वहाँ पे प्लेन कपड़ा आएगा। तो इस हिसाब से कंप्यूटर में वो डिज़ाइन बनाते हैं। उसके बाद उसको पेन ड्राइव में ट्रांसफ़र करके मशीन में एक पोर्ट होता है जहाँ पे पेन ड्राइव डालते हैं। जैसे ही मशीन स्टार्ट करेंगे तो जो डिज़ाइन ये कंप्यूटर में बनी है उसी टाइप का कपड़ा बनना स्टार्ट हो जाएगा। ये देखिए एक और डिज़ाइन जो अभी पीछे मशीन चल रहा है उसमें यही कपड़ा बन रहा है, तो ये उसका डिज़ाइन है। तो आइए चलिए देखते हैं यूनिट। अभी इस यूनिट में जो कपड़ा बन रहा है उसके बैक साइड में ब्लैक या तो वाइट कलर का थ्रेड होता है। तो पीछे जो ब्लैक कलर का बड़ा यार्न दिख रहा है उसको इसकी मदद से स्प्रेड किया जाएगा और उसके बाद ये पूरा का पूरा यूनिट जो ब्लू एंड ब्लैक कलर का दिख रहा है वो मशीन के एक पार्ट में सेट कर दिया जाएगा। जो डिज़ाइन हमने कॉपी की थी उसको पेन की मदद से अंदर इंसर्ट कर दिया जाएगा और जिस कलर का हमें कपड़ा बनाना है उसका जो ये भाई के हाथ में आप ये छोटा यार्न देख रहे हैं वो धागा इसमें सेट किया जाएगा। तो अभी ये जो येलो कलर का यार्न है उसको सेट कर रहे हैं। तो ये पूरे मशीन में एक तो ब्लैक या वाइट कलर का बड़ा यार्न और जो कलर का हमें कपड़ा बनाना है उस कलर का थ्रेड यहाँ पे ऐड कर दिया जाएगा। जिस मशीन में ये येलो यार्न डाल रहे हैं उसमें ऑलरेडी ब्लू कलर का पीछे कपड़ा बन रहा है। अब ये धागे को ब्लू कलर के धागे के साथ टाई करके इसके बाद ये मशीन येलो यार्न का थ्रेड लेगा और येलो कपड़ा बनना स्टार्ट हो जाएगा। ये मशीन 24/7 चलाए तो उसमें से 130 मीटर जितना कपड़ा बन सकता है। कपड़े की थिकनेस के हिसाब से इसके प्रोडक्शन में थोड़ा वेरिएशन आता है। अगर कपड़ा ठीक हुआ तो 130 मीटर से कम कपड़ा बनेगा। इस मशीन में जो ब्लू कपड़ा बना है वो आप यहाँ पीछे देख सकते हैं और जो येलो यार्न अभी लगाया है तो अभी ये देखिए येलो कलर का कपड़ा बनना स्टार्ट हो गया है। सूरत पूरी दुनिया में टेक्सटाइल हब के नाम से जाना जाता है। जो यार्न है वो यहाँ पे नहीं बनते पर यार्न से जो कपड़ा बनता है वो मेजोरिटी सूरत से ही बन के सप्लाई होता है। ये जो मशीनरी होती है उसकी स्टार्टिंग प्राइस 4 लाख से 1 करोड़ के बीच में होती है। जिस हिसाब से एक बड़ा मशीन और जिस हिसाब से स्पीड चाहिए, स्पीड ज़्यादा होने की वजह से कपड़ा ज़्यादा प्रोड्यूस होता है, उस हिसाब से ये कपड़े के मशीनरी की कॉस्ट डिसाइड होती है और दूसरे काफ़ी सारे फैक्टर से कॉस्ट डिसाइड हो सकती है। देखते हैं कुछ और कलर्स यहाँ पे कैसे बन रहे हैं अभी। टाइप का कपड़ा सूरत में बनता है, चाहे वो बेसिक कॉटन हो या तो जो ब्रॉकेड और अभी जो फैंसी कपड़े निकले हैं। ये देखिए जो अभी पीछे यूनिट में बने हैं वो इस टाइप के कपड़े बने हैं। आजकल इस टाइप का फैब्रिक बहुत ही सेल होता है। ज़्यादातर कुर्ती, शेरवानी या लहंगा हर चीज़ में इस टाइप का फैब्रिक यूज होता ही है। अभी हमने देखा कपड़ा कैसे बनता है, अभी हम जा रहे हैं एम्ब्रॉयडरी सेक्शन। ये एम्ब्रॉयडरी का बड़ा सेक्शन है जहाँ पे इस टाइप का फैब्रिक पे एम्ब्रॉयडरी अभी चल रही है। सबसे पहले इस टाइप का प्लेन मटेरियल को मशीन में फिट किया जाता है। तो ये देखिए यहाँ पे बहुत सारे कलर्स के अलग अलग फैब्रिक्स हैं। सबसे पहले जिस कलर के कपड़े पे एम्ब्रॉयडरी करना है उसको ऐसे छोटे बीन की मदद से इस पे फिक्स किया जाता है या ताकि कपड़े में कोई बीच में रिंकल्स ना आए। इसमें छोटे पैच वाला भी मशीन होता है।
मशीन में अभी कपड़ा सेट हो गया है और वो पीछे की साइड मूव हो रहा है। तो इसमें जो ये पैच वर्क के यूनिट्स है उससे नीचे की साइड से एम्ब्रॉयडरी बनना स्टार्ट हो जाएगा। इसमें भी कंसेप्ट सेम ही है, जो कंप्यूटर में डिज़ाइन सिलेक्ट करते हैं और ये डिज़ाइन डिज़ाइनर की मदद से वो रेडी करते हैं और उसके बाद उसको पेंडर में कॉपी करके मशीन में इंसर्ट कर लिया जाता है। अभी इसमें जो एम्ब्रॉयडरी होगा उसमें कुछ इस टाइप का एम्ब्रॉयडरी होगा, तो चलिए देखते हैं। ये देखिए एम्ब्रॉयडरी होना यहाँ पे स्टार्ट हो गया है। जो मैंने आपको डिज़ाइन दिखाई थी उसमें 2-3 कलर के एम्ब्रॉयडरी थे, तो अभी ये जो कलर है वो पूरे डिज़ाइन में जहाँ जहाँ पे होगा वहाँ पे एम्ब्रॉयडरी हो जाएगी। उसके बाद नेक्स्ट कलर का एम्ब्रॉयडरी होना स्टार्ट होगा। पूरा डिज़ाइन बनने में 5 से 6 घंटे लगेंगे। ये देखिए दूसरे एक मशीन में पूरा ये पैटर्न बन गया है, कलर सिर्फ अलग है और अभी इसको हटाया जाएगा और नया कपड़ा जैसे आपको दिखाया था वैसे सेट किया जाएगा। जितना बारीक और ठीक एम्ब्रॉयडरी होगा उस हिसाब से इसमें कितना टाइम लग सकता है वो डिसाइड होता है। और काफ़ी टाइम क्या होता है मशीनरी में जो ये एम्ब्रॉयडरी होता है तो कुछ एक्स्ट्रा धागे दिखते हैं, तो सेल करने से पहले यहाँ पे जो आप लड़कियाँ दिख रहे हैं वो एक्स्ट्रा धागों को कट करने का काम करते हैं। पूरे सूरत में काफ़ी सारे लेडीज़ हैं जो घर बैठे ऐसा फैब्रिक मंगा के सिर्फ धागे काटने का काम करके ही वो अच्छी खासी इनकम जनरेट करते हैं। ये मशीन में पूरे प्लेन कपड़े पे सेम टाइप का एम्ब्रॉयडरी वर्क किया जाता है, जिसका मशीन का साइज थोड़ा बड़ा है। अभी ये जो यूनिट है यहाँ पे आप देखेंगे जो ड्रेस मटेरियल में जो छोटे छोटे पैचेस में एम्ब्रॉयडरी होता है उसका ये मशीन है जो कंपैरेटिवली बड़े मशीन से थोड़ा छोटा है। अभी यहाँ पे ड्रेस में आगे की साइड का जो पैच वर्क होता है वो बन रहा है। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि कुछ कुछ धागे हैं जो ठीक से स्टिच नहीं हुए हैं, वो भी मैं आपको दिखाऊंगी इस टाइप की खराबी को वो करेक्ट कैसे करते हैं। जो मैंने आपको मशीन में बताया था कि कुछ धागे ठीक से स्टिच नहीं हुए हैं या तो कुछ
जगह पर उसका स्टिचिंग रह गया है उसको इस हिसाब से टेलर की मदद से मैन्युअली सेट किया जाता है। अभी ये जो टेलर है वो आप देखिए कुछ एरिया में धागे नहीं स्टिच हुए हैं, उसको ये मशीन की मदद से मैन्युअली स्टिच कर रहे हैं। ये एक बॉर्डर वाला फैब्रिक है, दोनों बॉर्डर के बीच इनफ स्पेस है ताकि इसको कट करने में आसानी हो। ये देखिए ये है 1 बॉर्डर, सेकंड, थर्ड, वैसे ये पूरे फैब्रिक में 5 से 6 रो है। और जैसे मैंने आपको बताया था कि एम्ब्रॉयडरी के टाइम पे कुछ एक्स्ट्रा धागे रह जाते हैं, जो ये पीछे लेडीज है वो
Impossible to imagine life without a touch of sweetness. Sugar is so much a part of our lives that we hardly ever think of what goes behind the making of sugar, beginning with sugarcane. The cultivation of sugarcane is supported by a large number of agricultural workers in India. On an average, India now produces over 200 million tons of cane every year. In fact, India is the largest producer of sugar in the world. And about 465 sugar mills make that fact possible, like this one close to Meerut near New Delhi. The process of converting cane to sugar is a long one, and a lot of energy in the form of fuel and electricity is needed for it. The sugar-making process also generates a lot of waste, especially after crushing in the form of bagasse. But many sugar mills like this one have evolved efficient methods, where this so-called waste bagasse actually becomes a highly efficient source of energy. In this sugar mill alone, about 1,800 tons of bagasse is generated every day. The bagasse is used to produce power and process steam. 9.5 megawatts of bagasse generated power runs the entire sugar production process, with enough surplus to supply electricity to 700 houses in the neighborhood. Sugar mills are usually situated in remote areas where access to power is not easy. Such energy-efficient systems have been suitably self-serving for the sugar industries until now. But in the context of the potential of bagasse, it should not be limited to eco-friendliness and energy efficiency within the sugar industry alone. About 10 megawatts of surplus power can be generated through bagasse in sugar factories with a daily crushing capacity of 2,500 tons. This surplus electricity from an agro-waste can be made available to neighboring areas, thereby creating opportunities of growth in remote Yuvraj Kshirsagar.
भारतीय कृषि क्षेत्र भारत की नेशनल इनकम और जीडीपी में योगदान के साथ विकास के दूसरे क्षेत्रों में अहम भूमिका अदा करता है। कपास, जूट, चीनी, फूड प्रोसेसिंग जैसे अनगिनत उद्योग रॉ मटेरियल के लिए कृषि पर ही निर्भर करते हैं। इंसान की जिंदगी में खाने के अलावा भी कई जरूरतें ऐसी हैं जिनमें कृषि का बहुत बड़ा योगदान है। कपड़े के लिए कपास, तेल के लिए ऑयल सीड, कॉफी के लिए बीन्स, चाय की पत्ती और यहाँ तक बड़ी बड़ी गाड़ियों से लेकर घरेलू कारों और दुपहिया वाहनों के टायरों के लिए रबर भी कृषि से ही मिलती है। भारत में अगर इंडस्ट्री ग्रो करती है तो उसके अनुरूप कृषि क्षेत्र की ग्रोथ भी जरूरी है, क्योंकि अगर पर्याप्त मात्रा में रॉ मटेरियल चाहिए तो कृषि उत्पादन क्षमता भी बढ़ती है। कृषि और उससे जुड़े व्यवसायों से तकरीबन 2/3 जनसंख्या जुड़ी हुई है, जिसे अपने जीवन यापन के लिए घर से लेकर न जाने कितनी चीजों की जरूरत होती है। इस सारे जरूरत के सामान बनाने में कृषि का योगदान हमेशा रहता है। कृषि से जुड़े लोगों की आमदनी कम होने का सीधा असर भारतीय इंडस्ट्री बाजार पर भी पड़ेगा, क्योंकि अगर लोगों की इनकम बढ़ेगी तभी वो इन उद्योगों के बनने वाले सामान को खरीदेंगे। भारत या फिर किसी भी देश में एग्रो इंडस्ट्री का विकास वहां की कृषि क्षमता पर निर्भर करता है। ये कृषि उत्पादों को प्रोसेस करके उन्हें खाने के अलावा दूसरे कई कामों के लिए तैयार करने में सहायक होता है। एग्रो इंडस्ट्री एक बढ़ता हुआ क्षेत्र है जो कि सीधे सीधे कृषि पर ही निर्भर करता है। एग्रो इंडस्ट्री एक तरह से कृषि का ही विस्तार है। भारत पैक्ड फूड बनाने में दुनिया का अग्रणी देश है, जिसमें फ्रोजन फूड से लेकर कई तरह के एग्रो प्रोडक्ट्स शामिल हैं। पिछले कई वर्षों में भारत ने इस क्षेत्र में बड़ी सफलता हासिल की है, जिसका एकमात्र कारण यहाँ का कृषि क्षेत्र है। भारत कृषि क्षेत्र को विकसित करके ही एक विकसित औद्योगिक देश की कल्पना कर सकता है। कृषि विकास के बिना औद्योगिक विकास के बारे में सोचना
In Austria, technicians check for welding on pipes for a hydropower plant. Over in Indonesia, spices are being cleared of biological contaminants. In Budapest, pharmaceuticals are being created. And operators run a Chinese power plant that provides electricity to thousands of homes. These are common activities, taking place every day in many parts of the world. They rely on nuclear technologies that use radioactive materials. The benefits of these technologies, whether used in agriculture, industry, or medicine, are plentiful. Like other processes, they generate waste. This waste contains radioactive elements. People and the environment must be protected from the potential hazards of such waste, now and in the future. So countries need to manage their radioactive waste safely and securely, and make sure it's kept under control. This responsibility starts as soon as a country decides to use nuclear technologies. And techniques are available to manage radioactive waste. Radioactive elements are unstable and emit radiation as they decay. The decay rate is measured in half-lives. This means the time it takes for the activity of a radionuclide to halve. After another half-life period, the activity is again down by half. This continues, and eventually the material emits only negligible amounts of ionizing radiation. Each radionuclide has its own half-life, so waste can be hazardous for periods of time stretching from a few hours or days up to hundreds of thousands of years. Radioactive waste is classified depending on the half-lives and the level of radioactivity of the nuclides it contains. According to the IAEA's safety standards, there are 6 classes of radioactive waste. Each waste class has different management and disposal needs. Techniques exist to manage this radioactive waste and the spent nuclear fuel from power plants and research reactors in a safe and secure way. Waste containing only radionuclides with very short half-lives can be stored for a few days or years to allow for the decay of the nuclides. This type of waste is usually generated when radioactive materials are used for research or medical purposes. Eventually, it can be disposed of as conventional waste. Other waste forms need to be managed for radioactive waste disposal. By volume, most radioactive waste has low levels of radioactivity. This includes the majority of the waste that comes from the routine operation of a nuclear power plant, and waste that's produced when medical and industrial devices that use radioactive sources are no longer needed. This could be because the source has decayed and the remaining radioactivity isn't strong enough for its original purpose, or the device is damaged or obsolete. In these cases, the radioactive source needs to be removed from the equipment and prepared for storage and eventual disposal. Some countries process their waste at centralized waste management and storage facilities. Upon arrival, the waste is controlled to check for any surface contamination, and the radiation levels are measured. Details of the waste type are noted for the inventory before the waste can be processed further to prepare it for storage and disposal. Such processes can involve measures to reduce the volume of the waste, such as compaction and incineration. Encapsulation is used to immobilize the contaminants. After being placed in appropriate containers, the waste is stored.
It will remain in this kind of facility until a suitable place or system for its disposal is established. Many countries already have near-surface disposal sites for waste with low levels of radioactivity. These facilities can consist of silos in the ground, trenches, or vaults. Once they're full, they will be backfilled with grout or soil, sealed and closed according to their disposal license. Alongside the radioactive waste produced by the routine activities at a nuclear power plant, nuclear power generation produces spent fuel or high-level waste. Such waste is low in volume, but has a high level of radioactivity, and it remains hazardous for thousands of years. In some countries, the spent nuclear fuel that can no longer be used to generate electricity is reprocessed to extract usable material for new fuel. Other countries consider the spent fuel as waste for direct disposal. In all countries generating nuclear power, the spent fuel is currently stored either in water pools or dry casks at secure storage facilities. Waste management experts around the world agree that underground geological disposal is the best and preferred option as a solution for high-level waste and spent nuclear fuel. This would be in a location where geological conditions are stable and the waste can be contained and isolated from humans and the environment until it no longer presents a hazard. While there's still no geological disposal facility of this type in operation, some countries have already selected a location, designed the facility, and conducted safety assessments. A few, for example, Sweden, Finland, and France, are well advanced in their development. Radioactive waste with low and intermediate levels of activity is already being disposed of in geological facilities in several countries. Since its inception, the IAEA has assisted its member states to safely manage their radioactive waste. The IAEA produces internationally respected safety standards and offers technical guidance. At its headquarters in Vienna, Austria, the IAEA hosts meetings and workshops, bringing together experts from around the world to exchange experiences. International teams, led by the IAEA, review security measures at waste storage facilities. The IAEA also helps countries to securely store high-activity sources in advance of disposal. Its experts run training courses in radioactive waste management and conduct missions worldwide to assist with the conditioning of disused, sealed radioactive sources. Its safeguards inspectors make sure that all nuclear material, including spent nuclear fuel, is accounted for and used solely for peaceful purposes. As populations grow and nations develop, we'll be making more use of nuclear technologies. This will result in more radioactive waste. And more waste means more needs to be done to meet the challenges. With the technologies now available, the new developments in the pipeline, and the continuous support of the IAEA, countries are well equipped to manage radioactive waste safely and securely.
That's right. Yes. The need to meet wastewater treatment regulations and reduce water usage is driving many industrial facilities to implement zero liquid discharge, or ZLD systems, as a solution. Suez's standard ZLD system consists of a vertical tube falling film evaporator, or brine concentrator, followed by a forced circulation crystallizer, enabling you to eliminate liquid waste streams from your plant and produce high purity water for reuse. Feed wastewater is transferred from a wastewater pond or tank and is pumped into a feed tank. Here in the feed tank, the pH is adjusted for deaeration or decarbonation. The feed pump then transfers the wastewater through the heat exchanger, where the temperature is raised to near its boiling point. The heated brine is then pumped up to the deaerator. In the deaerator, non-condensable gases such as carbon dioxide and oxygen are removed from the brine. The deaerated brine then flows into the brine evaporator sump. The brine from the deaerator enters the sump and mixes with a large volume of brine. Brine is transferred from the sump to the flood box, located at the top of the evaporator heat transfer tubes, using the recirculating pump. Brine in the flood box is distributed in each of the heat transfer tubes. The liquid flows down the tubes, coating the inside wall as a thin film within each tube. As the liquid flows down the tube, a portion of the brine evaporates and produces steam. Both the liquid brine and vapor are flowing in the same direction. For the brine that reaches the sump as liquid, it recombines with the brine already in the sump, as well as new feed brine coming into the sump from the deaerator. That mixed volume will then recirculate back to the top of the tube and shell. Evaporated water vapor flows through the mesh pad mist eliminators. The mesh pad mist eliminators remove any brine droplets from the vapor. That vapor exiting the mist eliminators flows to the vapor compressor. The compressor increases the vapor pressure slightly. The compressed vapor flows to the shell side of the heat transfer tubes of the brine evaporator. The vapor condenses on the outside of the vertical tubes. The condensed vapor flows down the outside of the heat transfer tubes and is recovered as a distillate. The distillate flows to the distillate tank and then is pumped through the heat exchanger. Hot distillate is cooled to heat incoming feed water. The cool distillate is available for reuse or recycle. Concentrated brine from the brine evaporator is sent to the brine crystallizer. The concentrated brine is routed to the shell and tube brine heater. The concentrated brine is heated to above its boiling point in the brine heater. The heated brine then enters the crystallizer vapor body. Upon entering the vapor body, the heated brine flashes. When the brine flashes, water evaporates from the brine as steam vapor. This concentrates the brine, and crystals form in the circulating brine. The flashed vapor in the vapor body flows through the mist eliminator to the vapor compressor. Vapor from the compressor is routed to the shell side of the shell and tube heater, where it condenses and is recovered as condensate. Recovered distillate is available for recycle and reuse. The crystallized solids are further processed by a filter press or centrifuge to achieve zero liquid discharge, and in some cases used as a valuable byproduct. Hello students, welcome to EPG Pathshala.
Today we will study the module on waste, its types and classification from the paper Solid and Hazardous Waste Management. After going through this module, you will be able to define waste, classify waste and solid waste, and you will be able to differentiate the types of waste and categorize them into different categories. Waste is defined as any unwanted or undecided substances that is thrown away after its primary use. They are generally generated from human and animal activities. Urbanization and increased advancement in industrialization has resulted in the generation of huge amount of waste. Over the years, the waste gets accumulated and causes a lot of impact on the environment and health of an individual. Waste management is generally intended to reduce the effect of waste on the environment and health. Based on this, it is essential that we have to understand, we should have a know-how about what is waste, how it is classified, and how you can segregate into different classifications. Now let us look into the classification of waste. Based on the physical state of a material, wastes are classified into three types: solid waste, liquid waste, and gaseous waste. Solid waste can be in the form of a solid or semi-solid. Examples: waste tires, scrap material, latex paints, and furniture. Liquid waste are waste which are in the form of a liquid. It is also called as sewage. They are generated from domestic washings, chemicals, oils, and other hazardous household liquids. Gaseous waste are waste